planning to study abroad but want a destination that offers world-class education, affordable living, and a multicultural environment? So in today's video, we are exploring Belgium, one of the Europe's most underrated but excellent study destination for Indian students. So before starting the video, I would like to introduce myself for our new viewers. मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इटली का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रेवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ. एंड इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रहा हूँ बेल्जियम स्टडी वीज़ा के बारे में. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड मैं बेल्जियम के टॉपिक पे जाऊँ, क्यों आपको बेल्जियम में पढ़ना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है. बिफोर दैट आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन चाहिए स्टडी इन बेल्जियम के रिगार्डिंग, देन आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे थ्रू टॉपमेट पे 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो फॉर 20 मिनट. फर्स्ट कॉल विल बी फ्री ऑफ 20 मिनट एंड हम आपको गाइड करेंगे आपके बेल्जियम स्टडी वीज़ा के जर्नी में. सो नाउ आई विल टेल यू व्हाई बेल्जियम. It is centrally located in Europe, easy travel to France, Germany and Netherlands, high quality English taught courses across many fields, affordable tuition fees and cost of living, a strong focus on research, innovation, a multilingual environment where you can grab Dutch, French, German and English as you know, you can see that people are speaking and you can also grab the skills of these languages, so more. And most important, कि आप ऐसे देश में आओगे जो यूरोपियन यूनियन की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हब है, हेडक्वार्टर है, बिजनेस हब, इनोवेशन हब, टेक हब, एवरीथिंग. सो आई टोल्ड यू द रीजंस. नाउ आई विल टेल यू सम वेरी जनरल रीजंस. अगर आप बेल्जियम पढ़ने आते हो ना, बेल्जियम एक तो अंडररेटेड कंट्री है, स्टडी वीज़ा लोग कम डालते हैं इंडिया से, तो आपको चांसेस ज़्यादा होगा इसकी एक्सेप्टेंस का. दूसरा, यहाँ पे जो पार्ट टाइम इनकम है काफ़ी अच्छा है. देखो, ऑन एन एवरेज आप 1000 से 1500 यूरो महीने का बना लोगे, मिनिमम बता रहा हूँ आपको. आप अगर एक जनरल टाइम फ्रेम में काम करते हो रोज, ठीक है, सो इट्स अ गुड प्लेस टू अर्न गुड इनकम एज वेल एज आप यहाँ पे अपना रहना, खाना, पढ़ना सब मैनेज कर लोगे. इन लेटर इन द वीडियो आई विल ऑल्सो टेल देयर आर स्कॉलरशिप इन बेल्जियम टू. सो इफ योर एकेडमिक प्रोफाइल इज टू स्ट्रॉन्ग, यू कैन अप्लाई फॉर दोज स्कॉलरशिप एज वेल एज you can do application at different Belgian universities. So Belgium is perfect for someone who wants academic excellence plus the enhance of their European exploration, thought process. If they want to explore Europe, because it's also Schengen nation, so you can explore 28 other Schengen states. So now I talk about top universities. So वहाँ की top universities की बात करूँ तो UCLouvain है, जो कि पूरी दुनिया में टॉप 50 ग्लोबली रैंक करती है, बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, लॉ, बायोमेडिकल साइंस एंड डेटा साइंस. अगर आप इन फील्ड में बैचलर या मास्टर्स के प्रोग्राम करना चाहते हो, मोस्टली दे हैव मास्टर्स प्रोग्राम बट दे हैव आल्सो बैचलर इन इंग्लिश, सो यू कैन टारगेट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. दिस इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी. Another is Ghent University, situated in the Ghent city of Belgium, strong in biotech, agriculture, environmental sciences courses of either bachelor or master's degree. Third one is UCLouvain. It's top choice for economics courses, medicine and philosophy, also for the engineering courses if you want to study from Belgium. Fourth one is Vrije Universiteit Brussel, VUB, known for AI, computer science and social sciences courses related to the master's and the bachelor field. You can check also this particular university if you want to study in Belgium. Fifth one is University of Antwerp, okay, specialized in business, IT, design and maritime science. And according to my personal point of view, if you are planning to study in Belgium, Antwerp can be one of the best university to study, okay, and also the best place to earn part-time income. So now I will talk about top courses. Like मैंने universities तो आपको top की बता दी, कौन सी top courses है जो Indian students वहाँ पे कर सकते हैं. So the first one is artificial intelligence, either in bachelor or masters, computer science, electrical and mechanical engineering, data science, physics and nanotechnology, biomedical sciences, public health, nursing, MBA courses. You can do also MBA from Belgium at a very low cost, international business courses, supply chain management courses, architecture, philosophy and European studies, and humanities, and also some kind of other social sciences courses. So basically there are plenty of courses. I think more than 300 plus courses you can find in English in Belgium in different universities. So you can check. Now I will talk about admission requirement. For bachelor program, you need higher secondary school certificate with at least around 70%.
okay, and English proficiency proof of you have to show your English proficiency proof by giving IELTS, TOEFL, and 6 band score आपको चाहिए, TOEFL में 80 plus चाहिए, and also if you have a very strong academic background like 85 to 90% in your academics, there is no gap. If you have gap, there is a very good experience, then you can go with medium of instruction also, they can accept. Now for master's program, so you have to have minimum 3 years of bachelor degree, and also GPA between 6 to 7. IELTS, as I told you, for bachelor, same 6 band score, TOEFL 80 plus. You need a statement of purpose also. You need to create 2 letter of recommendation, European standard, Europa CV, European CV. And if you are applying for design and architecture course, then you need to also submit your portfolio for the application. So applications you can submit directly through university's website. So मैं आपको वीडियो में बताऊंगा tuition fees and cost of living. So before going on that part, I will tell you, like if you want to study in Belgium again, and if you want one-to-one free consultation for studying in Belgium in 2026 intake for free, then you can book one-to-one free meeting with us. Go in the description. There is the link of TopMed. Book from over there. Now I talk about tuition fees and cost of living. Tuition fees per year for bachelor is like 1000 euros to 4000 euros, but easily manageable. You can pay in installments. Okay, you can earn and you can pay. Even the master's program vary from 2000 euros to 6000 euros per year. MBA up to 5 to 12k euros per year. So living cost, if I talk, then the housing, if you will be living in a shared accommodation, it will be like 200 euros to 350 euros or 400 euros maximum, and food 150 to 250, transport 50 euros maximum. So basically it goes the living cost like 800 euros to 1200 euros per month. Okay, so even if you are earning like 1500 euros, you can easily manage your living cost, your studies, everything. Now there are scholarships also, like there is a scholarship named VLIR/UOS. There is also Erasmus Mundus Joint Masters Program scholarship. There is also some universities specific scholarship like UCLouvain, VUB. Other universities have their one scholarship. Like in that scholarship उनके आपके कुछ फीस को माफ़ कर देते हैं. अगर मान लो 5000 है तो आपकी फीस हो जाएगी 4000 हो जाएगी, 3800 हो जाएगी, 4200 हो जाएगी, ऐसे यूरोज में हो जाएंगी. ठीक है. सो देयर विल बी अ ह्यूज गैप, सो यू कैन फिल दैट एंड यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो. ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स. सो वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पहले तो ऑफर लेटर, फाइनल एडमिशन लेटर, वैलिड पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ फंड. अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो कम से कम 10 लाख से 11 लाख, बैचलर के लिए आ रहे हो तो 14 से 15 लाख INR चाहिए. 1 महीना पुराना होना चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और पे करना होगा आपको, और मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अप्रूव्ड डॉक्टर. तो इसकी भी चेकलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है. सो ये मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया. अब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब देखो 20 घंटे पर वीक तो कर सकते हो. मैं बहुत अच्छा आपको एक ये बताता, पूरी यूरोपियन कंट्री में मोस्टली अभी यही चल रही है, बट कोई चेक करने नहीं आता है. वो 20 घंटा एक बस उनका ऑफिशियल डेटाबेस में मेंशन है, हाँ इतना करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जॉब करते हैं, अच्छे पैसे बनाते हैं, अपना खर्चा के साथ साथ अपना वो हर चीज़ निकाल लेते हैं, पढ़ाई खर्चा हर चीज़ दे मैनेज. इफ़ दे वर्क दे मैनेज, सो यू कैन ऑल्सो मैनेज. ओके, उसके बाद आपको PSW मिलेगा 12 मंथ की जॉब सर्च वीज़ा, एंड यू कैन फाइंड जॉब, plenty of jobs in Belgium. Even you can grab some languages, European languages while studying over there, and then English and that European language, and then after your degree go and grab the job. So in this video I have talked about Belgium study visa, and if you want to study in Belgium you have to follow one simple step. Go in the description, book 1-to-1 free meeting with us, and we will help you in your Belgian study visa journey.